17, 18, 24 and 25 of the Constitution have been violated. The incumbent provincial government has failed to establish rate of law in the province, on account of which the fundamental rights of the citizens noted here and above have been violated. The people of Balochistan also include civilians, members of the law enforcement agencies, that is the police. ठीक है, कोई खास बात आप बताएं ना। फंडामेंटल राइट्स का सारा है, वो तो जाहिर है। तो हम आपको ऑब्जेक्शन तो हमने ओवररूल कर दिया ना। जी सर, वो ओवररूल जनाब। तो फिर इसकी रेलेवेंस नहीं रही ना। जो मेनली हमने तो आपकी एंटरटेन फरमा ली। जी सर, अभी नंबर आज लगा नहीं है, लेकिन डायरेक्शन जनाब ने कल ऑर्डर फरमा दिया था कि नंबर लगाएं इसको, वो तीन में शायद लग जाएगा। उनकी पिटीशन के ऊपर जनाब ने वो ऑब्जेक्शन जो था रजिस्ट्रार का, कल तो हमने शॉर्ट एक ही लफ्ज का ऑर्डर है। जी सर, वो लेकिन नंबर लगना चाहिए था और कुछ नहीं। जी मगर हमने कह दिया ना, वो हमने मुस्तरद कर दिए हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड हो गए थे आपके केस में। जी सर, लेकिन आज लिख देंगे, फिक्र ना करें। जी सर, ठीक है। लेकिन इसमें मैं जनाब को जो गुजारिश करना चाह रहा था, जो डायरेक्शंस मिसिंग पर्संस के हवाले से थी, वो भी इसमें सारी शामिल हैं कि किस तरह आगे प्रोसीड करना है, कौन कौन। वो बताइए, वो कहाँ है? जी, वो इसमें सर। तो फिर कमीशन बना होगा ना उसी ऑर्डर की रोशनी में। पुराने जो कमीशन बना है इसका इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का, वो कब बना है ये बताएं ना। वो ये जो आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो कहाँ है? जी सर, वो तो 2011 में कमीशन बना था। ये इसकी जजमेंट में बताइए। जी सर, इसमें सर जो है एक ही किताब है। ये पैराग्राफ में लौट, जो पैराग्राफ इसमें 3 है, यहाँ से शुरू है कि 3। जी सर, पेज 2020। किलिंग्स की बात है ज्यादा, मिसिंग पर्संस की बात कहाँ है? किलिंग्स, अबडक्शन फॉर रैंसम, सेक्टेरियन किलिंग्स। नहीं, आप कह रहे हैं ना मिसिंग पर्संस की बात, वो कहाँ है इसमें? जी सर, वो सारी इसमें पूरी तफसील के साथ उन्होंने। ये तो ज्यादातर टारगेटेड किलिंग्स है ना। जी, रैंसम, सेक्टेरियन किलिंग्स। जी, ये पैराग्राफ 5 सर अगर देखेंगे, IDPs, we direct the government, पैरा 5 से ऊपर 3 लाइनें, we direct the government of Balochistan to accelerate this process and at the same time पैराग्राफ कौन सा पेज बताइए? कौन सा है ये? पेज 2005 ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं, 2005 इसमें वो सब पैराग्राफ 5 द फेडरल गवर्नमेंट। जी जी, फेडरल गवर्नमेंट से ऊपर की 3 लाइन एंड देन फेडरल गवर्नमेंट पैरा 5 में भी, और फिर देन 6 भी। ये तो मर्डर्स एंड किलिंग्स हुई थी ना, सेक्टेरियन वायलेंस। जी, लेकिन वो आती है ये रेलेवेंट नहीं है। जी सर, नेक्स्ट सर जो एक्सक्लूसिवली मिसिंग पर्संस को जजमेंट है सर, दूसरी PLD 2014, ये सुमो मोटो एक्शन लिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 305 रेलिवेंट इसके पैरा है सर 16 और 17। पैराग्राफ 16 और 17 में लौट, पेज है 320। As the federal government through Prime Minister, Cabinet working through Chief Executive in terms of Article 90 is very much in the picture, it is their duty to ensure the protection of these persons and also to ensure that all those officers who are responsible for their removal and have failed to account for this so far should be dealt with in accordance with law. The acting Defence Secretary, through the though he apparently did his best, could not achieve the object for which. ये रेलेवेंट है। जी मैडम, हाँ ठीक है, ये तो रेलेवेंट है। जी मैडम। एनी अदर केस? जी सर, नेक्स्ट सर है इसका पैरा 16 भी एंड 17 भी सर। 17 जी, 17 में सर है और 18 में भी कुछ डायरेक्शंस दी हैं। 17 पेज अगले पे है 321 पे। It may be out of context to note that in somewhat identical circumstances, the Supreme Court of Nepal in the forced disappearance cases dated first so-and-so applied the principles enshrined in the Convention Against Enforced Disappearances 2006, despite the fact that the Nepal had not ratified the same. Correct. आगे? जी सर, ये सर फिर इसको 18 में भी थोड़ा सा इस सवाल से। अदर जजमेंट? जी सर, दूसरी जजमेंट सर नेक्स्ट है
my lord, author judge ہیں دھرنا کیس میں فیض آباد دھرنا کیس PLD 2019 سپریم کورٹ 318 اس کا ایجنسیز کے رول کے حوالے سے بھی 318 PLD 2019 سپریم کورٹ 318 اس میں ریلیونٹ پورشن کیا ہے؟ پیراگراف 43 my lord, پیراگراف 43 42 my lord, 42 سے پیج 348 The report submitted by پیراگراف اس سے مسنگ پرسن کا کیا تعلق ہے؟ سر رول آف دی انٹیلیجنس ایجنسیز کہ ان کا کتنا ہے، کیا رول ہونا چاہیے، کیا ان کا ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن اپنے مینڈیٹ میں رہے. اسپیسیفکلی کچھ ہے اسپیسیفکلی مسنگ پرسنس کا تو ایز سچ نہیں، لیکن اسپیسیفکلی اگر اس میں ریلیونٹ ہے وہ جو ابھی لوگوں کو ہٹایا گیا ہے یہاں سے جو کر رہے تھے وہ پروٹیسٹ، جی ان کو تو پروٹیکشن ملتی ہے کہ وہ پیراگراف پڑھیے نا آپ. جی لافل اسمبلی وہ کر سکتے ہیں. اس یہ یہ دیکھیے پیراگراف 2 پڑھیے، پیراگراف 53 کا. جی سب 53 کا 2 پڑھیے. جی Every citizen and political party has the right to assemble and protest, provided such assembly and protest is peaceful and complies with the law, imposing reasonable restrictions in the interest of public order. The right to assemble and protest is circumscribed only to the extent that it infringes on the fundamental rights of others, including their right to free movement and to hold and enjoy property. یہ تو ریلیونٹ ہوگا فار دی پیپل ہو آر پروٹیسٹنگ. مائی لارڈ پھر پیراگراف 3 بھی پڑھ لیں. جی سر. Protesters who obstruct people's rights to use roads and damage or destroy property must be proceeded against in accordance with law and held accountable. The Constitution earmarks the responsibilities of the Election Commission, which is must. I'm surprised you are citing this case. میں تو ہمیشہ سے اس کی میں نے کہا تھا. جی سر ہم تو پہلے دن سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ہر ادارہ اپنے ود ان دی ڈومین آف کانسٹیٹیوشن کام کرتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یا جناب کے پاس آ رہے ہیں اور کورٹس آ رہے ہیں. اگلا بتائیے. اس میں جو میں صرف اس حد تک کرنا چاہ رہا تھا پیراگراف 2 میں the learned AGP tendered a document in a sealed envelope which spelled our eyes. وہ ریلیونٹ نہیں ہے اس کیس کے لیے. ٹھیک ہے سر. میں جناب کو چکا اس حوالے سے. اور سر اس میں ہائی کورٹ کی کچھ ججمنٹس ہیں. PLD 2022 سندھ 264. جی 264 سر. PLD 2022 سندھ PLD 2022 سندھ 264. یہ بھی مسنگ پرسنس کے متعلق ہے سر. اس کا لاسٹ پیراگراف 264 میں لوگ نہیں ایکچوئل کیا چیز پڑھے ہم ادھر سے 266 پہ لاسٹ پیراگراف ہے. 266 لاسٹ پیراگراف. The right to life is the most precious of all fundamental rights of the citizens. یہ تو جنرل باتیں ہیں, کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جی یہ 2 ججمنٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیں سر, وہ بھی میں ریفر کر دیتا ہوں. مسنگ پرسن پہ بتائیے. جی مسنگ پرسن یہ اسی حوالے سے کہ جو ایک تو ہے سر PLD 2021 اسلام آباد پیج 1. جی ریلیونٹ پیج پیرا 3, 4 and 5. The incident یہ وہ متی اللہ جان والا کیس ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا. The incident took place
The incident took place during daytime in heart of the capital of Pakistan. Admittedly, some of the abductors were wearing police uniforms. Some of the vehicles used by them during the commission of the crime had an official appearance. The victim was a person engaged on the profession of journalism. The incident was caught on the CCTV installed at the premises of the school. Prima facie because आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं? ये कल तो आप मतियुल्लाह जान वाला केस नहीं बता रहे थे, आज आप जजमेंट साइड कर रहे हैं। मैं तो बताना चाह रहा था, वहां तक पहुंचा नहीं था कि हुकूमत में कौन था, पहुंचा नहीं था वहां तक। दूसरी बात है कि मैंने कहा ये जिम्मेदारी फिर आप हुकूमत जिसकी थी उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की, उनकी जिम्मेदारी, उनकी शायद इंटरवेंशन से ही ये जल्दी बाहर आए हूँ, वरना तो देखे ना सर बाकी लोग 4.5 महीने बाद इमरान रियाज बाहर आया। नहीं, आपका गलत फहमी है। ऑनरेबल कोर्ट की भी इंटरवेंशन थी, इसमें कोई शक नहीं है। नो, ये भी आपकी गलत फहमी है। कुछ फहमी तो हो सकती है, गलत फहमी शायद नहीं। आप सुनेंगे तो बता देंगे आपको, आप बेहतर जानते हैं। नहीं, हम बेहतर नहीं जानते। ये गलत फहमी या खुश फहमी या जो भी बात है, ये हो गई थी रिकॉर्ड, कैमरा लगा हुआ था। कैमरा लगा हुआ था जी, उसका रेफरेंस है जी, सीसीटीवी फुटेज। शायद कुछ और नतीजा ना निकलता। वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं यू कॉट विथ योर हैंड इन द कुकी जार, तो आप वो फंस गए थे। सर इमरान रियाज वाले केस में भी फुटेज लगा हुआ था। प्लीज डोंट टेक द क्रेडिट, it was egg on the face, and I'm surprised not a single head rolled as a consequence. When something has been established or by video recording an abduction taking place and presumably state agencies involved in the abduction look the other way, no consequence, then why govern? If you're so helpless to govern, if you had taken a stance then, maybe not a single missing person would have been picked up thereafter. Dekhiye, it's all very well to cry and complain about others. This was a case which was documented. Rarely missing person cases are documented. This was a recorded, documented case. Did the state come forward and say, offer rewards, these are the persons caught on TV, come and give us names? 2 मिनट का केस ये सॉल्व होता था, 2 मिनट में। नहीं, देखिए, या तो डर लगे या हुकूमत चला लें या फिर बस ऐशो कर लें। हर चीजें हमारे पे आप डाल देते हैं कोर्टों पे। ये केस 2 मिनट का सॉल्व करने का केस था। नो, नॉट अ सिंगल पर्सन रिमूव, नॉट अ सिंगल पर्सन थ्रोन आउट ऑफ सर्विस। बस ठीक है, अच्छा, ओह तुमने उठा लिया सबके सामने, दुनिया ने देख लिया, नहीं बंदे को छोड़ दो। ये वजह थी, आपका कोई इंटरवेंशन नहीं था। She was a single order saying take action against this person. बाद में बड़ी बड़ी लोग आके तकरीरें कर लेते हैं ना, जब जिनका वक्त होता है ना उस वक्त करके दिखाएं। अब जब मैं रिटायर हो जाऊंगा फिर मैं जाकर तकरीर करना बैठ जाऊंगा कि जी ये मैं ये कर लेता वो कर लेता, आप कहें कि जी आज आपने क्या किया, ये बताइए। सर मैं एक गुजारिश कर दूं, ये आपका जो केस है ना, दिस इज द आई थिंक द ओनली डॉक्यूमेंटेड केस। सर इसमें जो इमरान रियाज वाला केस है उसमें सर जेल से वो रिहा होते हैं, सीसीटीवी फुटेज के सामने गाड़ियां आती हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं, उसका पूरा एविडेंस है। और अच्छा मुझे सर इस हवाले से एक इमरान रियाज ने कल फोन किया, उसने कहा जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुझे अगर बुलाएगी, सिक्योरिटी देगी तो मैं हाजिर हूंगा, मैं सारे फैक्ट्स जनाब को पेश करूंगा। बहरहाल मैंने उनका पैगाम सिर्फ इस हद तक, उसका खुद फोन आया था, मैंने वो जनाब को पहुंचा दिया। अब सर मैं एक गुजारिश करूं इस हवाले से, रुक जाइए सर, अब आप यहाँ रुक जाइए सर, या आपने ये प्लेटफॉर्म आप फिर पॉलिटिकली इस्तेमाल करना शुरू, ये सुन लीजिए। इस केस से पहले एक और केस था जो कि अफसार आलम साहब थे, वो मीडिया पे बात कर रहे थे, हमने कहा हमारे सामने आके बात करें, क्यों? ठीक है, वो आए सामने बात की, बिल्कुल क्यों? वो कोई असर रसूख वाले शख्स मेरे ख्याल में नहीं है। नहीं सर हैं, बिल्कुल नहीं मेरे ख्याल में नहीं है। वो आए, उन्होंने हिम्मत पकड़ी और सामने बात की। ये बात आपके जरिए कह रहे हैं, अगर मुझे बुलाएगा हम क्या रेड कार्पेट पे छाएंगे किसी के लिए? ऐसे नहीं होगा ना। हमारा काम जरा सा देखिए, आप यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बिफोर एनीथिंग एल्स, तो हम ज्यादा से ज्यादा हेबियस कॉर्पस में प्रोड्यूस द बॉडी पेश कर सकते हैं ना, यही होती है।
اگر کسی کو کوئی ایلیگیشن اگینسٹ سمون جائے FIR کاٹیں, جائے سوٹ فار ڈیمیجز فائل کریں. اگر مجھے عدالت بلائے گی کمال ہے, آپ ان کا نام استعمال کر رہے ہیں, ہم تو ان کو نہ بلانا چاہتے ہیں نہ ان کا نام استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ برائے کرم جو کل کر رہے تھے, ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی مت کریں, اور وہ نہیں کر رہے. نہیں یہ پروٹیکشن کے لیے انہوں نے چونکہ کہا ہے سر. پروٹیکشن تو ہمارے پاس کیا کوئی فوج کھڑی ہے جو ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے؟ آرڈر تو فرما سکتے ہیں نا سر. آپ کا آرڈر از دی فائنل اتھارٹی, جو وائلیٹ کرے گا he will suffer, he will face the consequences. ایسے کیسے باہر جاتے ہیں, ان کو ابھی بھی پروٹیکشن ملی ہوئی ہے کیا؟ جو اس کا ظاہر ہے اتنی پروٹیکشن نہیں ہوگی. وہ یہاں کے سچ بولے گا, فیکٹس بتائے گا. 4.5 مہینے جس حالت میں رہا, he was not able to speak even for few months. پھر باہر جائے گا, یہاں تو آ کے اسٹیٹمنٹ دے دے گا. شاید وہ, بہرحال میں اس پہ مزید کمنٹ نہ ہی کروں تو بہتر ہے. میں اس پہ آگے چلتا ہوں. شاہین صاحب, you are up now, I will use another word. Can you plead a case of a person not before us? اگر بندہ اس قابل نہیں ہے, who are you to plead his case? اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے, لیکن جو قابل ہے, جس کا آپ نے ذکر کیا, اس کے بارے میں تو آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے. میں نے تو جناب کو ججمنٹ لکھائی ہے, خود عرض کی ہے نا, مگر آپ ذمہ داری بھی کھڑی کریں نا. پھر ذمہ داری تو جناب نے تعین فرمانا ہے, نہیں ہمارا. لیکن اب آپ پھر اس کو وہی بنا رہے ہیں سیاسی اکھاڑا. ہم یہ کہتے ہیں مائی لارڈ, کمیشن جب بنے گا. حد تک کی جو پٹیشن تھی نا, جو آپ نے فائل کی, اس میں آفس آبجیکشن کے لیے وہ لگی تھی, وہ دیٹ ہیز بین ریلیزڈ. فردر جو بھی آرڈرز ہوں گے وہ ہوں گے, ویٹ فار سم ٹائم. اگر آپ یہ انڈیویجول کیسز کریں گے تو پھر آپ آفس آبجیکشن سسٹین کرنا پڑیں گے. ہم آپ کی پٹیشن انٹرٹین کر رہے ہیں کہ آپ کا جینوئن کنسرن ہے مسنگ پرسن کی, پبلک امپورٹنس اور پبلک ایٹ لارج. اگر آپ کے ذہن میں 2-4 ہی لوگ نہیں سر, ٹھیک ہے, نہیں 2-4 نہیں, سبھی جو جس چیز کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا مسنگ میں ہیں یا جن کے ساتھ کوئی مسنگ میں رہے ہیں, تو جناب اونلی ان ریلیشن ٹو دی CMA وہ آپ کی آفس آف. لیکن پھر اب آپ تشریف رکھیں, ہم دوسروں کو سن لیتے ہیں. نہیں سر, نہیں, میں تو اپنی بات بس فردر ایکشن از ٹو بی ٹیکن. دیکھیے نا, ابھی کنسولیڈیٹڈ آرڈر ہوگا نا ابھی جب. سر میں تو جناب کے سامنے عرض کروں گا, جناب نے فیصلہ فرمانا ہے نا, کہ میرا کون سا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ جناب اس کو نہیں اس قابل سمجھتے کہ اس کو پارٹ آف مائی پریئر یا ریکویسٹ ایکسیپٹ ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی. دیٹ یور لارڈشپ ہیز ٹو ڈیسائڈ. لیکن میرے جو سبمیشن ہیں وہ میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب سر اس میں آپ نے کہا تھا کیس لاء سائٹ کرنا ہے. جی کیس لاء ایک ججمنٹ میں آپ کو عرض کر رہا تھا, وہ 2018 CLC کنسیڈریبل پیریڈ ان کو آنے دیں. ان کو آپ کا تو آبجیکشن ریموو ہو گیا نا. جی ہو گیا, آبجیکشن ریموو ہو گیا, لیکن مین کیس بھی تو جناب نے سن لیا ہے نا. میں مین کیس کے حوالے سے صرف ایک ججمنٹ اور دے دیتا ہوں, وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے, جسٹ فار کنسیڈریشن. نہیں, اور پوری بات کر لیں نا. جی, تو شیخ رشید صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کچھ بھی نہیں کہا. جس ایک بندے کا مجھے کال آئی, میں نے آپ کو انفارم کر دیا, کسی نے مجھے فردر کال نہیں کی. بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ ہم جی فلاں جگہ گئے, آپ جا کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی وہ خود کیوں نہیں کہتی, اتنے بڑے پالیسی خود انہوں نے کہا تو ہے, لیکن شاید اس قابل نہ ہوں اپنی بات نہیں کر سکتے, تو ہمارے لیے کیا یہ لوگ. جب الیکشن ہوا تھا, جب ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا کیس تھا تو وہ تو آگے کورٹ, جب دھرنا کیس تھا تو وہ تو آگے. اب آپ ان کے اسپوکسمین کدھر سے بن گئے ہیں؟ یا تو سوری ٹو سے نا, پلیز بیکم اے پروفیشنل, obtain a وکالتنامہ and file a وکالتنامہ. Please don't start pleading cases of powerful people who are well settled, have all the resources in the world, and when they want, they can come to court. Yes. And when they don't want, they don't come to court. And then you become their spokesperson. اگر پولیٹیکل ورکرز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے اٹھایا جائے گا, مسنگ پرسنز میں شامل کیا جائے گا, تو ہم جناب کے سامنے ایک عرضداشت تو پیش کریں گے نا. ڈیٹیلز تو وہی دیں گے نا انسیڈنٹ کی. ابھی تک تو کچھ نہیں پتا, آپ بھی جو بتا رہے ہیں آپ کو ایکچوئل فیکٹس تو نہیں بتا رہے. ہم نے بھی جناب سے جو گزارش کی ہے, ہم نے کہا ہے کہ اس کمیشن کو یہ امپاورڈ ہوگا, وہ جو سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ کی سربراہی میں بنے گا, اس کے پاس ساری ایویڈنس آئے گی, ان کو بلایا جائے گا, وہ کوئی ایویڈنس دیں گے تو ایکشن ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. کے لیے تو آپ کی پٹیشن پہ نمبر پڑ رہا ہے نا, تاکہ اس کو سنا جائے whether this is maintainable or not, or whether the commission is to be made or the earlier commission is totally ineffective. یہی میری سبمیشن ہے آپ کے سامنے. جب پھر آپ تشریف رکھیں, ہم ان کو سنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. بس صرف ایک ججمنٹ سے میں ریفر کر بنانا چاہ رہے ہیں, پھر ہم نہیں اجازت دیں گے آپ کو. نہیں سر, نہیں, میں نہیں بنانا چاہتا. میں تو I would be the last person to you are doing it repeatedly. آپ کو last time بھی ریکویسٹ کی تھی, please don't do this. سر جناب نے, میں نے تو صرف ایک ججمنٹ سر ریفر دیکھ لیں سر. 2018 CLC 1858
ریلیونٹ اس کا پیرا 17 ہے سر، ایٹ پیج 1358 جی سر 1858 پیرا 17 ریلیونٹ ایٹ 1869. ہاں یہ تو ٹھیک ہے جی سر، اس سے کون انکار کر سکتا ہے. جی چلیں now can we go to the next case. تھینک یو. کتابیں اٹھا. یہ امینہ مسعود صاحبہ جی آپ ان کی پٹیشن نمبر ہے 50. تھینک یو مائی لارڈ. ایک سیکنڈ آپ کی ذرا فائل نکالنا ہے. جی سی پی 50 ہے ان کی. آپ زبانی بتا دیں کیا باتیں ہیں. مائی لارڈ میرے شوہر جبری گم شدہ ہوئے تھے 2005 میں. تو اس وقت سوموٹو نوٹس ہو گیا تھا، افتخار چودھری صاحب نے لیا تھا، اور ساتھ ہی ان کے دوست فیصل فراز بھی جبری گم شدہ ہوئے ان کے ساتھ. تیسرا ایک انجینئر تھے ایبٹ آباد سے. 2005 میں کس کی حکومت تھی؟ 2005 میں پرویز مشرف کی دور میں ہوا تھا یہ. اس کے بعد پھر سو موٹو کے تحت ہی تقریباً آل پاکستان سے 41 آپ کے شوہر کیا کرتے تھے؟ میرے شوہر جی بزنس مین اور ٹریول ایجنٹ ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں. ان کے کالجز ہیں اسلام آباد میں. ریکور ہو گئے نہیں ہو گئے؟ جی ریکور ہوئے ابھی نہیں؟ نہیں ابھی تک نہیں ہوئے. نہیں تو آپ کے پاس بزنس مین اور ٹریول ایجنٹ کو انٹرسٹ کیا ہوگا اسٹیٹ کا ان کو اٹھانے میں؟ ایلیگیشن آپ کا کیا ہے؟ ہمارا تو یہی ایلیگیشن ہے کہ جو لیٹر آن جو لوگ ریلیز ہو کر آئے انہوں نے ایویڈنس دی کہ میرے ہسبینڈ کے خلاف تو ابھی تک کوئی ایلیگیشن نہیں. ریزن کیا تھا؟ لارڈ کوئی ریزن نہیں ہے. نوبڈی ٹولڈ می ایور کہ کوئی ریزن ہے. دیکھیں اسپیکولیشن تو کر سکتے ہیں نا جی کہ یہ زیادہ بولتا ہے حکومت کے خلاف اس کو اٹھا لیا، مطلب یا یہ پرویز مشرف کے ساتھ کوئی ان کی دشمنی تھی اس کو اٹھا لیا. کوئی ریزن آپ کے ذہن میں ہے؟ لارڈ میرے ذہن میں تو کچھ نہیں آتا کیونکہ مائی فادر ان لا از آلسو ملٹری پرسن، از اے کرنل ریٹائرڈ، اور وہ اس وقت مشرف کے سینئر بھی تھے. مطلب آئی ایم جسٹ سیئنگ دیٹ وائی یو تھنک دا اسٹیٹ واز انوالوڈ اور یو ناٹ ایلیجنگ اٹس اسٹیٹ. آئی تھنک اٹس اسٹیٹ بیکاز جو بھی لیٹر آن 2007 میں 2006 میں 11 میں 8 میں جو لوگ رہا ہو کر آئے انہوں نے اس کی ایویڈنس دی. The star witness was عمران منیر. دیکھیں دو تین وجہ ہو سکتی نا. ایک تو مسٹیکن آئیڈینٹی، وہ غلط فہمی میں کسی کو اٹھا لیا، ایک ہی ہو سکتا ہے پاسبلٹی. ٹھیک ہے، تو پھر the minute they realize یعنی یہ تو غلط اٹھا لیا اس کو چھوڑ دو. یا کوئی مے بی ٹرمپڈ اپ چارج یا جو بھی ان کے ذہن میں ہو جس نے بھی یہ کام کیا کہ جی یہ اوپر سے حکم آیا ہے کہ اس کو اٹھانا ہے اس وجہ سے، یہ زیادہ ایکٹیوسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو آپ جو بتا رہی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ بزنس مین تھے، تو میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. 2001 سے لے کے یہاں پہ ایک وار اینڈ ٹیرر، یا تو آپ کہیں کہ وہ سپورٹ کر رہے تھے کسی کو، مجاہدین کو، یا کیا، تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے نا. وہ تو ایک سوشل ورکر بھی تھے، ان کا ایک ہاسپٹل بھی تھا، وہ آج بھی چل رہا ہے. جو اپنے I'm just trying to understand. I'm not saying کہ نہیں اٹھایا ہے، مگر میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں جب تک انسان کو وجہ نہ پتہ چلے تو پھر کلپریٹ جو کرمنل کیسز میں ایسی ہوتا ہے نا کہ بھئی کس کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس طرف جاتی ہے کرمنل پروسیکیوشن. ٹھیک ہے، کہ اس کا کوئی ذاتیات کا جھگڑا تھا یا کوئی زمین کا تنازع تھا یا وہ اس کے خلاف بات کرتا تھا، تو اس سے کڑیاں جڑتی ہیں. ہاں یہ پاسبل پرپیٹریٹرز ہو سکتے ہیں.
تو میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وائی was he member of some organization which the government did not like or any case like that? No sir, اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. میرے فادر ان لا نے جو کیا عمر تھی جب وہ he was 41. آپ کا یہ کیس کمیشن میں چل رہا ہے یہ ڈس اپیئرنسز کا جو کمیشن ہے آپ نے کوئی کمیشن نے 2013 میں اس کو ڈسپوز آف کر دیا تھا. کیا اس کا کیا آرڈر کیا انہوں نے؟ تو انہوں نے تو ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا تھا. تو obviously کیونکہ ہے آرڈر آپ نے لگایا اس میں؟ نو سر, اس لیے نہیں لگایا کیونکہ آرڈر تھا بیکاز آپ نے لکھا ہے کہ ارلیئر جو ہے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے ہیں 600 پروڈکشن آرڈر کمیشن نے ایشو کیے تھے. تو بالکل that is why I'm asking. Where was he last seen? He went from home on 30th July 2005. راولپنڈی گھر سے نکلے ہیں اور ان کے دوست بس اسٹاپ پہ ان کا ویٹ کر رہے تھے. دونوں نے ڈیوو بس لی ہے ٹو میٹ. پشاور جا رہے تھے دونوں. اچھا, کیوں؟ ان کے ایک دوست ہیں عبد الغنی, ان کے ساتھ ملنے کے لیے. تو جب ان سے بھی رابطہ کیا گیا عبد الغنی بھائی سے بھی, تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ لوگ یہاں نہیں پہنچے. آپ کس کو سسپیکٹ کرتی ہیں؟ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس بھی ہیں, کچھ ہماری ایجنسیز بھی ہیں, تو آپ کس کو سسپیکٹ کرتی ہے؟ مطلب لاسٹ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن؟ جو ایویڈنسز ہمیں ملے تھے جو کہ ریلیز پرسنز کی طرف سے تھے, تو انہوں نے تو یہی بتایا تھا کہ وہ ISI کی کسٹڈی میں تھے. انہوں نے دیکھا تھا جی, اور وہ عید کے دن تھے. ان کو جانتے تھے؟ جانتے نہیں تھے, مگر انہوں نے پھر بھی ان کا نام پوچھا, تھوڑی بہت بات چیت ہوئی, اور باہر آنے کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جس میں کہ ان کے لائر نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے عمران منیر نے مسعود جنجوا کو دیکھا ہے, اور انہوں نے پھر وہ ساری چیزیں سامنے آئیں. اس بات کو کتنا عرصہ گزرے؟ اس کو 2007 میں یہ ہوا تھا, اور اس وقت 2005 سے لے کے 2018 تک تقریباً میں نے 749 CMs ڈالی ہیں HRC 965 میں, اور جو کہ صرف میرے ہسبینڈ سے پرٹیننگ نہیں تھی. جب GIT بناتے ہیں نا, تو GIT میں آپ نے کبھی اپیئر ہوئی ہیں, پارٹیسپیٹ کیا GIT میں؟ سر سب کچھ ہوا تھا مگر GIT میں ISI کے اور IB کے سارے ممبران ہوتے ہیں نا, پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے اس میں, SSP لیول پہ یا DIG لیول پہ, تو 8-10 لوگوں کی جو GIT بنتی ہے, کبھی آپ پیش ہوئی ہیں GIT میں؟ بے شمار دفعہ پیش ہوئی ہوں, راولپنڈی میں, CPO کے آفس میں, کمیشن کے اندر, اور ہر چیز. سر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ تمام کیسز جو کمیشن میں چل رہے تھے وہ سپریم کورٹ میں بھی چل رہے تھے, تو اس میں یہ ہوا کہ جب وہاں سے ڈسپوز ہوا تو یہاں سے آپ نے ابھی کہا کہ خدا نخواستہ وہ ڈیڈ ڈکلیئر ہوئے ہیں, تو وہ کیا ریزنز تھیں اس کی؟ ان کا تو یہی کہا ہے کہ وہ وزیرستان میں ان کو جو ہے طالبان نے اور اس طرح اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس نے مار دیا. بٹ یہ کہ اس وقت کے جو ججز تھے, جس طرح جواد خواجہ صاحب تھے, گئے تھے بلوچستان؟ نہیں, انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اس کے اوپر کوئی ایسی ایویڈنس نہیں دے پائے تھے, نہ وہ یہ کہہ پائے تھے کہ کہاں پر ان کی قبر ہے. My lord, I just want you to take up the cases of those two individuals, my husband and Faisal Faraz. کریں کیا بتائیں نا, جو ان کی جو کیونکہ ان کو اپرچونٹی نہیں ملی, جو کمیشن میں تو وہ سارے کیس ڈسپوز آف ہو گئے تھے 2018 میں. بتائیں نا, کمیشن کو چھوڑ دیجئے نا, اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ دیکھیے 2-3 باتیں نا. ایک تو یہ آپ نے اس موجودہ حکومت یا اس موجودہ حکومت کے جتنے بھی اہم اہلکار ہیں ان کے خلاف تو ایلیگیشن ہے نہیں. اب آپ کا ایلیگیشن ہے کہ 2005 میں ان کو غائب ہوئے, وہ 30 جولائی 2005. 30 جولائی 2005. تو اس بات کو کتنے سال ہو گئے؟ 25 تو کتنے سال ہوئے؟ 18 سال. جی سر, 18 ایئرس. 18 سال. اس وقت 30 ایئرز. اب 18 ایئرز ہم کوئی ایسی چیز بتائیں جو کہ کچھ ہم مدد آپ کی کر سکیں, مگر کوئی کیا
کیا ہم کیسے کر سکیں؟ کوئی یا تو دیکھیں آپ کبھی ہوتا ہے نا کہ جی کوئی تنظیم سے وابستگی تھی، یہ کوئی غلط بات تو نہیں، تنظیم انسان جوائن کر سکتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ انلیس اٹس اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، یا پھر کوئی اور بنا پہ جی ہوا ہو تو کہیں شک جاتا ہے نا اس طرف یا اس طرف، یا پھر وہ غلط فہمی میں اٹھا لیا ہو، یا پھر چھوٹ جاتے ہیں عام طور پہ لوگ. ہو سکتی ہے کیونکہ جب میرے فادر ان لا ٹاپ آفیشل سے ملتے تھے، مائی فادر ان لا، آپ نے کہا آپ کا تو کنیکشن بھی ہے آرمی سے. جی فادر ان لا واز کنیکشن ہے آرمی سے. مائی فادر ان لا از اے کرنل ریٹائرڈ. Actually, he will also be very concerned about his son. Of course, and for this matter, he met the President. پرویز مشرف سے انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے ISI کے جو DGs تھے ان سے ملاقات. ان کو ملا بتایا کیا تو انہوں نے یہ غلط آدمی ہے، ہم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے یا نہیں. ہمارے پاس ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہمیشہ ان کو ملی کہ ہم ابھی ہیو نو انٹرسٹ ان یور سن، وی ہیو نو انٹرسٹ، ہمیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم آپ کے بیٹے کو کیوں پک کریں گے. پھر جی نہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ کچھ آپ بتائیے نا کہ جب وی آر ہیئر ٹو ہیلپ. ٹھیک ہے، ہم نے یہ کیسز اٹھائے بیکاز اٹس اے میٹر آف گریٹ کنسرن ٹو اس. ٹھیک ہے، بٹ اینڈ دس مسٹ اسٹاپ. Exactly. And there used to be much more missing persons, and I think اب شاید نہیں ہو رہا ہے جو پہلے ہوتا تھا. I don't know, I may be wrong. مگر I've been Chief Justice Buluchistan as well. So بٹ تو اگر کوئی اسپیسیفک چیز ہے تو ہم کر سکتے ہیں. آپ کہیں ہم حکومت سے پوچھ سکتے ہیں، مگر پرابلی کوئی مثبت جواب نہیں ملے گا ادھر سے. بالکل میں یہ نہیں چاہ رہی کہ وہ وہی والی جو جس طرح سے آپ بتائیں نا کیا چاہتی ہیں، وہی ہم کریں گے. quite a lot of torture over these years. You have a lot of experience. You know, you have more experience than us. Exactly. تو اب آپ بتائیں what shall we do for you? My lord, for my case, for my husband's case, if you can, اب کوئی ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، پراپر گورنمنٹ بھی نہیں ہے کہ کوئی ان سے کوئی اس طرح کی بات کر سکے. بتائیں نا، وہ آپ ہم پہ چھوڑ دیجیے نا، آپ ہمیں صرف بتائیں، باقی ہم کام کر لیں گے. دوبارہ بھی GIT کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. I just want to know the truth. I just want to know the truth for my children and for myself کہ کیا ہوا، کہاں چلے گئے. اگر وہ دانا فاستہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آف کورس میرے خیال میں ملٹری سے ہی پوچھنا پڑے گا، کیونکہ ملٹری سے، آف کورس ملٹری سے، جنرل آصف منیر سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ کیا ہوا ہے میرے ہسبینڈ کو، کہاں چلے گئے. آپ نے نام لیا تو زمانے میں تو شاید وہ میجر یہ بھی نہیں ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، کیپٹن ہوں گے. So he would not know it, but we can, if you want, we can ask the government of Pakistan, and they can, if they have some information, then I'm sure the Attorney General. That would be really kind of you, my lord. But for this petition is also about ان پہ بھی آتے ہیں نا، پہلے آپ کا پرسنل کنسرن تو ہو جائے نا، وہ تو پھر بات کی بات ہے. Can we have a report if there is some information? My lord, I have taken down the details. And if whatever has happened, all she says is if I can know the truth of the matter. Yes. And I don't see why this government or those in charge of various institutions will want to assume responsibility if someone else earlier had done something illegal. There's no reason why they won't want to, and there's every reason that if they have some information they will tell you. So can you sort of, we'll pass an order, my lord, but unless you want to add something. My lord, یہ بھی دیکھ لیجیے گا جی صاحب، اگر there is an opportunity or option of constituting second GIT، اگر GIT میں ہوگا تو اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں. GIT میں کیا ہے وہ دیکھیں، وہ GIT دیکھتے ہیں ان کو کم سے کم جواب دے دیں گے، وہ ایک خانہ پوری ہو جائے گی، کچھ اس کا افیکٹ نہیں ہوگا. اس میں my lord کچھ بھی نہیں ہوگا. She has gone through the process. Now if it can be once again done with fresh pair of eyes, and we're not casting any aspersions on those presently there, but we have confidence if whatever, let the truth be told. Even if something has been done wrongly, let it be disclosed. My lord. ٹھیک ہے. My lord, تو یہ ذرا آپ دیکھیں that she has been in the forefront, not only for her own husband but for others also.
Ministry of Defense करेगा ऐसा, Ministry of Defense करेगा, ठीक है? तो the concerned ministries would be Ministry of Interior and Ministry of Defense. My lord. ठीक है, these are the, or any other? It's Ministry of Interior essentially. Or Ministry of Defense, because she says that she's alleging it against Pervez Musharraf, so that comes Ministry of Defense. He was president at that time. Ministry of Defense. Chief of Army Staff as well, so yes, Ministry of Defense. So let it be taken seriously, and we expect that if it can be resolved. My lord, we will furnish the report. For instance, in Argentina, a lot of people had disappeared, and the new government came and absolved itself. They said, "उन्होंने किया था, बता दिया." तो वो कम से कम तसल्ली तो हो जाती है ना लोगों को कि पता तो हमें चल गया. So otherwise, there's a question mark hanging all through, forever and ever. So, my lord, if I heard Ms. Janjua correctly, she mentioned that her father-in-law did meet General Musharraf at that time. Yes. And then he said that we have no interest in him. Said, so she said so. You've heard it correctly. So still, a person may still not tell the truth. So I will furnish report on that. A lot of time has now elapsed, 18 years. She is entitled to know the truth, if nothing more than just the truth. ठीक है? My lord, I have noted. अच्छा, अब बाकियों का केस बताइए आप. My lord, ये जो फर्स्ट तो यही है कि ये बताइए कि मिसिंग पर्सन्स के जो आप तो काफी इससे मुंसलिक रही हैं. जी जी. ये सबसे ज्यादा कब हुए थे मिसिंग पर्सन्स? ये परवेज मुशर्रफ के दौर में ज़्यादा हुए थे, और फिर उसके बाद कंसेक्टिवली जब ये पीपल्स पार्टी का दौर आया तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई बल्कि चलती रही. सिमिलरली इन PMLN, BTI एंड देन कोलिशन गवर्नमेंट एंड देन केयर टेकर. तो थ्रू आउट द हिस्ट्री जब से 9/11 से लेके आज तक ग्राफ ऊपर नीचे तो होता रहा है. आजकल भी ये बात हो रही है. जी आप एक सेकंड ठहरिए, मैं इनको बात करने दें. जी बताइए. जी सर, आजकल भी हो रहा है, ये केसेस आ रहे हैं, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस हो रही है. नहीं, जैसे शोएब साहिब साहब कहते हैं ना, किसी को उठाया फिर छोड़ दिया, वो वाले केसेस हम नहीं बात कर रहे हैं. हम वो वाले बात कर रहे हैं जिनको छोड़ा नहीं है, जो मिसिंग पर्सन्स हैं. जी जी. ये तो मिसिंग में नहीं रहे ना, ये उसमें आ गए, दस्तयाब हो गए, खुद आ गए, दस्तयाब हो गए. जो बात है वो एक अलग इशू है. हमारा जो जुरिस्डिक्शन है वो हेबियस कॉर्पस की जुरिस्डिक्शन है. When a person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. Then jurisdiction becomes criminal or civil. ठीक है, habeas corpus की jurisdiction limited होती है, produce the person. ठीक है, that is jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. तो अब हमें बताएं, there are missing persons who are today been picked up and are still missing. ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ आपको पता है या नहीं पता है? जी सर, हो रही हैं इस तरह से. नाम है कि लोगों के वो किधर हैं? माय लॉर्ड, क्योंकि लोग जनरली बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं ना, पूछते हैं कि भाई नाम बताओ, तो नेचुरली सरकार से हम पूछेंगे तो भाई फला मोहम्मद इदरीस कहाँ है, वल्द फला फला, तो वो फिर हमें जवाब देंगे ना. अगर हम एक जनरल बात कहेंगे, वो क्या जवाब देंगे हमें? लॉर्ड, इसीलिए मैं चाह रही थी कि ये कोर्ट, क्योंकि हमारी इसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता रही हैं और तकरीबन 18 में से 15 साल मैं यहीं पर पेश होती रही हूँ. इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए अब हर चीज़ें दौर बदलते जाते हैं ना. जी. कुछ लोग मिसिंग पर्सन आज भी मगर वो उठाए गए हैं, आपने कहा 2005 में या 2002 में. जी. ठीक है, तो वो यकीनन इस हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं ठहरेगी ना. तो फिर भी अगर आज ये गलत काम कर रहे हैं तो हम उनको रोक सकते हैं. दो बातें हो गई. देखिए, इसको जरा सा क्लैरिफाई कर लें. हमने पहले भी ये बात की थी कि अगर हमें टाइम नाम दे दें और पीरियड्स दे दें ना, तो दो बातें हो सकती हैं. एक तो हो गए पुराने मिसिंग पर्सन्स, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि उनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं. जी. एक दूसरा है कि ये चीज को रोका जाए, खत्म. बिल्कुल बिल्कुल. एक है उनको दस्तयाब करवाया जाए, वो अलग हम जरा उसको करना चाहते हैं, लॉजिकली चलना चाह रहे हैं. तो हम कम से कम
پرانا تو نہیں مسئلہ حل کر سکیں شاید، اگر آج والا تو ہم کر سکتے ہیں نا، رکوا تو دیں نا ساری باتوں کو، مسنگ پرسن کو رکوا دیں. بالکل سر، میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ جب اس کی کاگنیزنس لیں گے تو اس کی پالیسی کے اوپر ڈسکشن ہوگی کہ کیا یہ اسٹیٹ کی پالیسی بنی، آج ہی ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ بھائی یہ پالیسی روک دی جائے کہ لوگوں کو اٹھانا کم از کم لسٹ سٹاپ ہو جائے، تو پھر ہمارے پاس صرف پچھلے ہی رہ جائیں گے جن کو ریکور کرنا ہوگا. Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. I mean, this is a statement which is in accordance with if you give the statement today and then something happens tomorrow, then consequences will follow. You have to very carefully make the statement. My lord, this is a statement of law, and but we take some instructions. We want it in writing. All right. Now, who will give the statement? My lord, Secretary, Ministry of Interior. It should not be a section officer. No, it is. We want the highest level of people giving the statement. I think it's Secretary Interior for one, and the other could be. We want this on behalf of the government of Pakistan. So then I think not on his own behalf, naturally. He may be retired tomorrow, transferred tomorrow, so we can't hold him responsible, but it will be responsibility of the government of Pakistan. And I think this country has fractured from within, and part of it is derailment of democracy, and that is a major cause. In Balochistan, missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa, it's slightly different. In other provinces, it may be different. I am personally well conversant with Balochistan, so there is a different thing. And then there's also a very horrible other element. People are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases where we took 184.3 and we were told we can't take 184 sumoto in Balochistan. That was pilgrims going to Iran on ziyarat. 32 people were point blank murdered in Mastung area. That naturally is no involvement of the state, but people who place themselves at a higher pedestal than God knows what. They're so confused. اب بھی آپ نے اخبار میں پڑھا کل یا آج کا اخبار میں تھا کہ 6 نائی کو مار دیا وزیرستان میں. جی دیکھیے یہ ذہنیت، جو لوگ قتل کرتے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے کسی چیز کا. اس دنیا میں تو چلیں وہ شاید قانون کی گرفت میں نہ آئیں، مگر آخرت میں کیا کریں گے؟ مطلب آخرت میں کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھیے یہ اسٹیٹ کو بھی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا. یہ کوئی کورٹ ایک فیصلے کر کے کچھ نہیں کر سکتی ہے جب تک یہ پورا مشینری اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کرے. اور جی یہ پتہ نہیں کیا کرنے آ رہے ہیں. اب آپ نے بلوچستان میں بھی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ایتھنیسٹی گراؤنڈ پہ. یہ کوئی سلوشن آج تک کسی نے کوئی قتل و غارت سے کچھ پایا نہیں ہے. کوئی جینیون آپ کی بات ہے، آپ آئیے پولیٹیکل سسٹم میں الیکشن کروائیے. جب الیکشن ہوئے تھے لاسٹ والے میں تھا چیف جسٹس بلوچستان میں، بڑی مشکل سے ہم نے سارے الیکشن کرائے اور کچھ ایلیمنٹس نہیں چاہتے تھے الیکشن ہو. Because they don't want Pakistan strong. So we have to see what to do. یہ ایک اخبار کی سرخی لگی، آرڈر پاس ہوا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. Statement should be given by you in writing by the government. یہ کمیشن جو تھا مسنگ پرسنز کا، یہ وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے سر، ہے. کون ہیڈ کر رہا ہے؟ It is being headed by Justice retired Javed Iqbal. How old is he now? He retired from this court in 2011. So he should be now, what, 77, 78? 77? آپ آئے ہوئے وہاں سے کمیشن سے آئے ہیں، رجسٹرار ہیں آپ کمیشن. آپ سامنے آئیے.
कितने लोग हैं इस कमीशन के मेंबरान? सर यहाँ पे जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं और साहब शरीफ विर्क साहब रिटायर्ड, शरीफ विर्क साहब, मोहम्मद शरीफ विर्क, मोहम्मद शरीफ विर्क, ये कौन है? ये रिटायर्ड आईजी है जी। और कोयटा में है हमारे जस्टिस अमानुल्लाह खान यासीन ज़ई जी। ये वॉलंटरी है या इनको तनख्वाह मिलती है? सर हाँ तनख्वाह मिलती है सर, तनख्वाह मिलती है सर। सेक्रेटेरिएट है पूरा। कितना आपका बजट कितना है? सर मैं अंदाजा नहीं होता से बताया होगा सेक्रेटरी को, मुझे पता नहीं, मेरा ख्याल 4-5 करोड़ का होगा। तो आप करते क्या हैं? सर रजिस्ट्रार हूँ सर मैं कमीशन का। नहीं तो ये बस ये सर तनख्वाहें लेने के लिए कमीशन है या कोई और काम सर नहीं काम करता है सर कमीशन वाला, पता है ना। कराची में हमारे जस्टिस आपकी एनुअल रिपोर्ट आप जारी करते हैं, मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, मंथली भी करते हैं। कितनी रिकवरी कराई है आपने आज तक? तो बड़ी माशाल्लाह अच्छी। तो हमने बलूचिस्तान में रिकवर की, वो भी आप अपने पास डाल देते हैं कि हमने रिकवर किया। फिर नहीं, कितनी रिकवरी मंथली क्या है रेशियो आपका रिकवरी का? मैं अभी आपको पर्सन्स का ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट जनाब को देता हूँ। लेटेस्ट नहीं, वैसे ही बता दीजिए ना, महीने में कितने रिकवर करा, कितनी दफा मीटिंग बता देता हूँ। नहीं बात सुने, आपकी मीटिंग महीने में कितनी दफा डेली होती है सर? क्या डेली होती है? डेली होती है, उसमें लोग आते हैं, मुतासिरीन के घर वाले, सारे सब डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो रिकवरी कितनी होती है महीने में, क्या एवरेज है? यही मैं करने लगा हूँ सर। इस महीने में हमारे 46 जो है ना ये डिस्पोज ऑफ हुए, कैसे ये रिकवर हुए हैं हमारे यहाँ। और 46 का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, रिकवर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अंग्रेजी के दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं। सर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? सर ट्रेस्ड कह लें, ट्रेस्ड ट्रेस्ड। इधर आपकी रिपोर्ट किधर है? ये है ना, ये कागज का टुकड़ा है, दिखाइए क्या चीज है। 91 देख वो सारा दिया हुआ जो इनके मुताबिक ये देखते हैं। नहीं ये तो कुछ भी नहीं है ना, किसी का नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बाकी ये लिखा है आप आज कितने मिसिंग पर्सन्स हैं आपके रिकॉर्ड में? ये लिखी हुई फिगर टॉप पे ना, बता दीजिए ना। ये जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू दिसंबर 2022 7001, डिस्पोज ऑफ से क्या मुराद है भाई? या रिकवर हुए या नहीं हुए? आपके पास कैटेगरी होनी चाहिए ना। देखें जब रिकवर होते हैं, बहुत से वो रिकवर होते हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो बता देते हैं फलाना केस में कस्टडी में। असल में सर ये 4 ये इसका मतलब ये है। इसमें नहीं है ना जो अब आजकल मिसिंग पर्सन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो वो तो हमें नहीं पता, हमारे पास जो केस आता है उसका पता होता है हमें। आपसे यही तो पूछ रहे हैं, आपके पास आजकल केसेस आ रहे हैं? ये आ रहे हैं सर। आपका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? सर ये G91 में सर। हाँ G91। ये क्या घर है? नहीं सर ये सिविल डिफेंस बिल्डिंग है सर। अच्छा उसके अंदर है। नहीं तो आपके पास फॉर इंस्टेंस दिसंबर 2023 में कितनी केसेस आए हैं फ्रेश? सही बताने लगा, 46 केस आए हैं सर फ्रेश। जी फ्रेश। अच्छा इनका क्या बना? सर ये प्रोसेस शुरू कर दिया ना इसका हमारा। उससे पहले हम JIT बनवाते हैं, उसके बाद JIT क्या चीज है? तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। क्या चीज है बताएं, कौन होता है उसका मेंबर? उसमें SSP इन्वेस्टिगेशन होते हैं और साथ में रैप होते हैं IB के, ISI के, MI के और होम डिपार्टमेंट के। इसके 5-6 लोग। ये आप बताएं, मिस जंजू आप गई इस कमीशन के सामने? यस माय लॉर्ड, जब ये बना था 2011 आप में। इससे मुतमईन है या नहीं मुतमईन है? मुतमईन नहीं है हम लोग। हम लोग से मुराद हम और तमाम जो विक्टिम्स हैं जो वहाँ पे पेश होते आप भी केस में हैं? इसमें आपके साथ इनाम साहब जो खड़े, आप भी इस केस में हैं? I'm assisting, madam. I'm working with her, sir. ये आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? Not at all, sir. Not at all. कोई मुतमईन नहीं है सर। Dispose of की हैं. Honorable ने बड़ा। ये एक सेकेंड, तो लंबी बात नहीं करें, आप मुतमईन हैं या नहीं है? Dispose of जो है इसमें आप सिर्फ हाँ या ना बता दें। Satisfied, sir. एक सेकेंड इत्तेज़ाज़ साहब, आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? नहीं बस
صرف پوچھ رہے مطمئن ہے یا نہیں مطمئن ہے؟ نہیں مطمئن ہے یا نہیں مطمئن نہیں مطمئن؟ بس اوکے. یہ یہاں جو آج جو کیسز ہیں کوئی مطمئن ہے کمیشن سے یا نہیں ہے؟ کوئی مطمئن نہیں. اچھا یہ 2023 تک آپ نے 10,088 کیس لکھے ہیں. یہ کب سے شروع ہوئے ہیں 10,088؟ یہ ٹوٹل ہو گئے جو ہمارے پاس. میرا سوال سنیں. 2011 سے سر. دیکھیں آپ کے پاس مائی لارڈ جو پوچھ رہے ہیں نا, آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہونے چاہیے. دیکھیں ایک نمبر سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے, ہمیں نام سے ہے. ٹھیک ہے, فلاں شخص مسنگ ہوا اس تاریخ کو, آپ کے پاس رپورٹ آئی اس تاریخ کو. ٹھیک ہے, وہ اس وقت کا زمانہ مطلب ایئر ہمیں پتہ چلے گا نا, تو رسپانسبلٹی پھر ادھر جاتی ہے. تو ایسا ڈیٹا آپ کے پاس ہے؟ ایسی ہے, بلکہ ہم نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا سارا. سنیں نا, آپ نے یہ کاسمیٹک ویلیو ایسی رپورٹ بنی ہوئی ہے, آپ نے لکھ دیا ہے ٹوٹل نمبر آف کیسز اپ ٹو دسمبر 2023 10,088. یہ 10,000 کب سے شروع ہوئے ہیں یہ کیسز؟ یہ اب ان کے ہسبینڈ تو میں عرض کرتا ہوں, یہ پہلے ایک کمیشن ایک بنایا تھا سپریم کورٹ. آپ کو ایئرلی بنانی چاہیے نا, جو پچھلا ڈسپوز ہو گیا بیک لاگ پورا لے کے چل رہا ہے. آپ یہی نہیں پتا 10,000 کیس کب سے پینڈنگ ہے آپ کے پاس؟ سر پینڈنگ وہ لکھے ہوئے نیچے, جو پینڈنگ اس وقت ہے وہ بھی نیچے لکھے ہوئے. یہ 3 لوگوں کا کمیشن ہے, محمد شریف ورک, امان اللہ یاسین زئی صاحب اور جاوید اقبال صاحب, اور جسٹس ضیاء پرویز صاحب کراچی میں ہے. اور کون؟ جسٹس ضیاء پرویز صاحب کراچی میں ہے. اور ڈیلی اسمبل ہوتے ہیں, کیسے آتے ہیں کراچی سے؟ وہ کراچی میں کرتے ہیں, سندھ کا کیسز وہاں کرتے ہیں, الگ الگ کرتا ہے, الگ الگ. بلوچستان کے جو ہے وہ کوئٹہ میں ہوتے ہیں. اور ریکارڈ رکھتے ہیں آپ؟ خیبر پختونخوا کے کون ہیں؟ وہ اسلام آباد سے ہی جاتے ہیں, ہمارے جج صاحب جاتے ہیں یا شریف ورک صاحب جاتے ہیں. اور پنجاب سے؟ پنجاب میں بھی, پنجاب اور فرنٹیئر یہی ممبر ہیں پھر؟ جی 5 لوگ ہیں, 4 لوگ ہیں جی. ہاں 4 ہو گئے جی بالکل. Are they paid or is voluntary work? سر پے ہوتا ہے سر, پے کرتے ہیں سر. اب جو ہائی کورٹ کے ججز ریٹائر ہیں ان کو ہائی کورٹ کا پیکج جو ہوتا ہے وہ ملتے ہیں. اچھا, تو وہ تو ان کو پینشن ملتی ہے ویسے ہی. پینشن تو لیتا ہے نا سر. نہیں تو جو سپریم کورٹ کے ریٹائر ہیں ان کو سپریم کورٹ کی تنخواہ ہے, جو ہائی کورٹ سے ریٹائر ہے ان کو ہائی کورٹ کی تنخواہ. یہی ہے. ان کو کیوں ملتی ہے تنخواہ؟ کے علاوہ کیوں کر کے جو نہیں مطلب سمجھ نہیں آ رہی بات. جی یہ اٹارنی جنرل صاحب سے ان کا پیکج تو وہی ہوتا ہے نا جو وہ لاسٹ سروس کر رہے ہوتے ہیں. اٹارنی جنرل, do you know anything about the commission? My lord, I do not, and it's a bit of a news for me that they are paid, but I don't know if the presidential order permits such payments or not. I'd have to look up the presidential order related to the terms and conditions of judges. تھوڑا سا زور سے بولیے. I'd have to look up the presidential order on the terms and conditions of judges, whether post-retirement can they, if they are required to do any work. آپ جو بات کر رہے ہیں this is a common practice. کوئی بھی ریٹائر ہوتا ہے جب نئی جگہ جاتا ہے اس کو وہی پیسے ملتے ہیں. ہائی کورٹ سے ہے تو ہائی کورٹ کی ہے, ایملمنٹس ہیں, سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے. This is an addition to the pension. So I was not. No, but there is another order. I'm aware of it. That if a government gives an assignment to a retired judge, that's what they cannot be paid. That's what I was. I don't know what that order is because I recently something came before me that naturally if they're doing a private arbitration, that's something else. But it's a government assignment, then you're not paid for that. That is part. وہ کون سا آرڈر ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں ان کا بڑا بجٹ بھی ہے. یہ کون سی منسٹری کے نیچے آتا ہے؟ انٹیریئر سر. نہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں آپ کون سی منسٹری کے نیچے آتے ہیں؟ ویسے بجٹ ہمارا تھرو انٹیریئر آتا ہے, ادروائز دوسرا انڈیپینڈنٹ ہی ہے. انڈیپینڈنٹ الگ بات ہوتی ہے, اور گورنمنٹ میں کسی جگہ تو آپ کو بجٹ جاتا ہوگا نا, انٹیریئر میں, فائنانس میں, کس میں, ہیومن رائٹس میں, لا میں, منسٹری آف انٹیریئر آتا ہے بجٹ ہمارا. ابھی ہماری ایکسٹینشن کا نوٹیفکیشن اس دفعہ کیا ہے کیبنٹ نے. آپ کو کچھ پتا ہے اس کے متعلق؟ کھوسر صاحب آپ کچھ ذکر کر رہے تھے ابھی. وزٹ بھی کیا ہے, وہ آپ کی اس پریمیسز سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی. بجٹ اور اخراجات جو ہے وہ ہم نے لکھا ہے کہ ذرا منگوا لیجیے گا. کہاں لکھا ہے آپ نے؟ آپ کو پتا ہے؟ پٹیشن میں چونکہ وکیل ہوں نا جی اس پہ. اچھا, یہ آسم کی پٹیشن میں نے رائٹ کی ہے. اچھا, میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. اچھا, وہ ذرا منگوا لیجیے گا سارا. آج تک جو کچھ انہوں نے ایکسپینڈیچر ہوا ہے میٹنگ وغیرہ جو کرتے ہیں بالکل ایکسچیکر پر جو لگا ہے
और उनकी आउटपुट क्या है। स्टार बनाया हुआ, ये कौन से केसेस जो क्लोज हुए हैं रजिस्ट्रार साहब? क्या आप ये अपॉइंट कैसे हुए? कमीशन को नोटिफिकेशन हुई है? जी जी, my lord, it was appointed under Commission of Inquiry Act 1956 in 2011. Forever? जी, वो फिर एक्सटेंशन हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो नोटिफिकेशन है आपके पास? ये रजिस्ट्रार, आपका नाम क्या है? खालिद नसीम मेरा नाम है। खालिद साहब, आपके पास नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये चल रहा है? खालिद नसीम साहब है ना आपका नाम? जी। वो कौन सी नोटिफिकेशन है जिसके तहत आप बने हैं? My lord, this is SRO 149 था 134 of which file? ये है। My lord, I have this copy of the notification. हमारे पास है। कौन सी फाइल बताएं आप, जरा नंबर बताइए फाइल का। दे दे दोनों 161 देना, मुझे देना जरा। उनका उसका कौन से पेज पे? उसके किस पेज पे? अच्छा, ये गजेट नोटिफिकेशन है। मेरी ये जरा पढ़ ले आप, कैन यू रीड इट? आप जरा पढ़ ले नोटिफिकेशन। My lord, this is SRO 149 of 2011, dated 1st March 2011. Whereas on expiry of period allowed to the Commission of Inquiry on enforced disappearances, 136 cases of prima facie enforced disappearances are still untraced, and some new cases have also been received. And whereas the federal government is of the opinion that it is necessary in the public interest to appoint a commission of inquiry to look into all facts of the matter and to make efforts to trace the whereabouts of missing persons. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 3 and subsection 1 of section 5 of the Pakistan Commissions of Inquiry Act 1956, the federal government is pleased to appoint a commission of inquiry consisting of following, namely, Mr. Justice Fazlur Rahman, Chairman, former Judge of Balochistan High Court, Mr. Mohammad Sharif Virk, IGP, retired Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar member. ये पेमेंट की किधर है बात? बजट और ये The Commission of Inquiry shall have the following terms of reference, namely, ये तो 136 लोगों के लिए बनाया गया था कमीशन, प्लस कर दिया है टू ट्रेस वेयरअबाउट 30 इनटू, वो तो शुरू में होगा 2136 होंगे। अच्छा, फिर इसका वो किधर है पैसे? My lord, it's, I mean, there's only this Commission will have its says that independent secretariat with auxiliary staff. That's all it says. Are you satisfied with the working of the? ये इधर फैसल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, जरा आइए। I think you've done some work on missing persons. Are you in this case? No, I'm not, sir. So you have done some work on missing persons? Yes, my lord, I am. Do you know anything about this commission? Yes, sir. Please explain it. Yes. 6 महीने के लिए ये कमीशन बना था, तो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, वो बढ़ा देते हैं ना। Initially it was made for 6 months only. Yeah, my lord, it was for Kamal Mansoor Alam, जो कि 136 persons and for 6 months. Exactly. Unless extended by further orders. तो वो extend होते वो that is now कब बना है? 2011 में। नहीं, tell us. आप हमें बताएं, जरा ज़बानी बताएं। Sir, this is a commission which was formed in 2010. The only comprehensive report submitted by the commission was submitted by the first commission, which was headed by Kamal Mansoor Alam Sahab. If your lordship may see the paper book on page 1, I have attached a copy of that commission, and my lord, if your lordships go through that contains really most of the answers to this issue. Page? Sir, page 1. जी, headed by Justice Kamal Mansoor Alam. Yes. Retired थे ना? जी जी, retired he, as your lordship is, he was illegally removed by Pervez Musharraf. He was illegally removed by Pervez Musharraf in 2000, sir. He was a Supreme Court judge. PCO came, he refused to take the oath. Achha, okay. No, then he was a Supreme Court judge when he was heading the commission, or he was? No, he was retired, sir. And there were 3 members. And this is the kind of report. It's a very detailed. अगर आप इंडेक्स ही देख लीजिएगा, जो आप बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल केसेस के हवाले से
क्या हुआ, उस पे क्या रिकमेंडेशन हुई, उस पे क्या कॉम्पनसेशन अवार्ड हुई, वो इस रिपोर्ट में दी गई है. I would not attach the entire report sir with the annexures, but I'll place that before your lordships. Or then it was substituted by Justice Javed Iqbal. Sir, this commission's recommendations, there are very important recommendations in this. Where page? Sir, if your lordships may kindly see. रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल थी, ये पब्लिक कब हुई है? सर ये फिर पब्लिक तो नहीं हुई, लेकिन ये कॉपीज हैव बीन सर्कुलेटिंग सर. खुद अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है. कॉपीज कौन सा सर? पेज अगर आप 38 देख लीजिए काइंडली. अगर आप पहले सर अगर काइंडली पहले 27 देख लें. ये तो जो इनकी फाइनल प्रोसीजर रिकमेंडेशंस इनके हैं पैराग्राफ 57 पेज 40 के ऊपर, वो तो इन इफेक्ट करते ही है ना. जेआईटी तो बना दी इन लोगों ने हर चीज में. तो मेन प्रॉब्लम कमीशन का ये है, और ये सेक्रेटरी साहब इसको रिकन्फर्म करेंगे, is that this of course is not the first time your lordships have taken notice on this issue. Supreme Court has been active on this issue since 2006. The last order which was passed is very important, sir. Page 61 of this paper book. वो critical order, and sir, that is the first suggestion I would give in terms of a resolution to this problem. Page 61. A special implementation bench was created by this court regarding page 61. Relevant पढ़े? जी. Sir, page 61. On the last date of hearing, 26/9/2018, this matter was fixed before a 3-member bench of this court, headed by the Honorable Chief Justice of Pakistan. The operative part of the order passed on the said date is reproduced herein below. After hearing the applicants, we deem it appropriate that a special bench be constituted to supervise the proceedings before the commission, particularly with respect to the cases in which production orders. Now, मैं ये explain करूँगा थोड़ा सा बाद में sir. Production orders were issued by the commission, but the same have not been complied with, and monthly reports shall be submitted by the commission to such special bench for perusal of the honorable members. It also directed that all the matters pertaining to missing persons which come to the Supreme Court be referred to the commission for adjudication and disposal. This case is to be fixed before the special bench to be constituted by the Chief Justice of Pakistan. It is very much clear from the above order of this court that a direction was issued to the office of this court that all matters/cases relating to missing persons which come to this court shall be referred to the Commission of Inquiry on Enforced Disappearance for adjudication and disposal. Therefore, the office is directed to comply with the direction of this court given in the order dated 26/9/2018 immediately. The registrar of the Commission on Enforced Disappearance present in court has substituted a report through CMA number so and so, which is placed on record. Now, this is the critical operative part. However, the Commission on Inquiry on Enforced Disappearance is directed to submit a detailed report regarding the cases so far dealt with by the Commission, i.e. the status of each case, and if the case/cases have been disposed of, details thereof. That's the first direction. The second direction, the Commission shall also submit a separate report regarding the cases where production orders were issued by the Commission, and so far those cases have not been complied with. The requisite report shall reach this office for approval in chambers within 1 month positively. So this notion of production orders under the regulations is critical. When the Commission, after an initial inquiry... I don't understand.
if you don't know where a person is, how can you issue production order? Yes. What the commission does is that it does an investigation, and if it comes to a prima facie opinion on the basis of the evidence that this is a case of enforced disappearance. Now, when the term enforced disappearance is used, my lord, it by definition means that the abduction is by state officials. It can't be a private kidnapping. So when it only issues a production order when it comes to the conclusion that prima facie this is a case of enforced disappearance. Now the commission, without knowing the whereabouts, somebody has to say that the custody is with us. Oral evidence hota hai. Now the reason why the Supreme Court passed this order is, and this will be confirmed by the registrar, is 645 production orders have been issued. ये 2018 का ऑर्डर आपने पढ़ा जी। अब 2024 में इसके बाद कुछ हुआ होगा ना? इसके बाद इस केस में जहां तक मुझे मालूम है कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 750 कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने 2022 में स्टेटमेंट ये दिया था कि 645 प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैव बीन इशूड टू द रेलेवेंट एजेंसीज, ओनली 51 हैव बीन कंप्लाइड विद. इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली सी एक प्रोडक्शन ऑर्डर जरा पेज 66 पे देख लीजिए. That is the critical thing. That's the problem with the commission, is that their orders are not complied with. Page 66. इन्होंने तो ये तो पूरे क्लोज ही कर दिए केस. ये सर वो भी मैं आपको दिखाता हूं. इनको मार करके दिया है मगर इन्होंने जवाब नहीं दिया. नीचे ये लिखा हुआ है क्लोज ड्यू टू नॉट बीइंग केसेस ऑफ. ये पूरी रिपोर्ट नहीं है. इनकम्प्लीट एड्रेस, विड्रॉल बाय कंप्लेंट्स, नॉन प्रोसिक्यूशन. ये पूरी नहीं है. ये जो स्टेरिक बना हुआ है, मैंने इनसे पूछवाया, कह रहे सारे केस ही बंद हो गए. तो ये पूरे 10,000 केस बंद हो गए. सर पूरी नहीं है. मैं भी आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं. मैंने पूरी रिपोर्ट पेज 66 अगर देख लीजिए, पढ़ लिया. Since these orders, there are 645. Amna has just informed me that there are now 700. Yet commission itself has come to the prima facie opinion that this is a case where the relevant officials of the state are involved, and those orders have not been complied with. और हुआ ये उसमें से one step at a time. जी. Attorney General, मैं आपको रिपोर्ट पूरी देख लूं. Have a look at the production order. जी सर. मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ. सैंपल के तौर पे मैंने लगा है. My lord. तो वो कह रही थी, वो तो यही बात कह रही है. ये सही बात है. इसका क्या हुआ फिर? सस्पेक्ट है ना, कुछ सस्पेक्ट कर रही है. If these production orders, it's a government constituted commission, and the government constituted commission has ordered something, then what happens now? He's saying that these production orders are not being complied with. I think under the Commission of Inquiry Act 2017, the Commission has the powers of contempt. Powers of Judge of Supreme Court, sir. And if those powers were ever exercised. Object is not to send people to jail. No, but the object is to, if the people are illegally detained, to set them free. जी. वो तो बात की बातें हैं. So I'm just पनिशमेंट में हम मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. That's right, sir. अगर हम पनिशमेंट में फौरन चले गए तो मसले का हल नहीं होगा. That's right, sir. That's right. No, I'm just with regards to the production orders. I mean, I'd have to check with the commission what happened. I mean, this is 2020, 10 December 2020. So, देखें, what we can. I'm just thinking now aloud. Subject. What everyone says, that let the government, because production, you are directed, the government is directed in one form or the other, that you have to give us some response to a production order. That's right. Yes, no, whatever, no, we want to keep him, he's being tried in a court of law. I don't know, whatever the reason is, but it has to solicit a response, some response. Of course, this is not the responsibility of this government, because this, for instance, this production order is dated 2020. Yeah.
ठीक है, 10th November 2020. So we don't put the burden on your heads, but at least we want to know what you have to offer. So we will certainly give you time. And ये सारे production orders, if we tell the commission to provide them to you in a tabulated form, name, parentage, address, whatever, so we can easily traceable, and then you can submit a comprehensive response report. Unless you have some better solution. I think that's कमीशन के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, ये उनके सामने 193 के पावर है उनके पास, और वो अगर इन्फोर्स करा नहीं सकते अपने ऑर्डर्स, तो जो प्रोडक्शन ऑर्डर वो इशू कर रहे हैं, आई थिंक व्हाट माय लॉर्ड चीफ जस्टिस, तो उनके पास इम्प्लीमेंटेशन का पावर तो है अंडर द 2017 एक्ट। आप बताएं, आप जरा माइक अपनी तरफ कर लें जी। ये अगर जनाब पेज 29 मेरी पिटीशन जो है, नंबर इसको शायद अभी तक नहीं लगा, हम आपके ऑब्जेक्शंस ओवररूल कर दिए, आप उस पे उसी पे अटके हुए। नहीं, मैं ये तजवीज़ देना चाह रहा हूँ। इसमें कौन सा है? ये पेज 29। अब नंबर, अच्छा नील नंबर नहीं लगा, वो नंबर के बारे में 20 हाँ मिल गया। उसमें तो आप कमीशन के मेंबर्स लिखे हैं ना, आपने प्रपोज किया है कि ऐसा कमीशन मैंने वो उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है, पैराग्राफ ग्राउंड एफ है। ये ग्राउंड एफ में जो लाइन 8वीं लाइन है, द पिटिशनर देयरफॉर अर्जेस दिस ऑनरेबल कोर्ट टू सेट अप एन इफेक्टिव एंड पर्पसफुल कमीशन इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स conferred upon this honorable court and articles 187 of the constitution, order 32, rule 1 and 2, read with order 36 of the Supreme Court rules 1980, coupled with the principles of civil procedure code, as was done by this honorable court in the case of Watan Party PLD 2012 Supreme Court, comprising of the following. Now the ones that I suggest, we are at the moment in a different point. You are suggesting a reconstitution of the commission. So, yes, it's not that we are disagreeing with you. At the moment, what we are saying is that the commission has apparently done some work. You may not be satisfied with it, but there are some production orders. So we want to ask the government, why have they not been complied with? That's the first thing. Number two, what we want to do from the commission is we want complete details. Just not give us numbers, give us names, etc. And periods is very important, in which period it has happened, because nobody wants to touch it if you put the burden on the present setup. Let's, for want of a better term, use this word, that why am I responsible for everyone? So then we want to break it up into setup. And of course, if you're not satisfied, which there is general dissatisfaction with the working of the commission, then we can call upon the government. They may consider reconstituting the commission. They may not want to reconstitute the commission, but we'll give them an opportunity to consider whether they want to or not want to. We don't want to become the government of Pakistan. सर, मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी पता हो कि इस जो इनकी कमीशन है जो बनी हुई, इसमें इनहेरेंट डिसेबिलिटीज और डिफेक्ट्स हैं। मैं आपको ये अर्ज करता हूं, आप चाहते हैं चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज बने जिसके 2 साल अभी भी रिटायरमेंट में बाकी हो, तो वो तो मुनासिब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जज के खिलाफ नहीं सर, मैं अर्ज करूं, उसकी वजह यह है, ये कमीशन जब भी रिटायर्ड जज को माफ कीजिए कोई नहीं सीरियसली रहेगा, ये बड़ा सीरियस मैटर, विद रिस्पेक्ट। Therefore, I propose the chairman should be a sitting judge of the Supreme Court with at least 2 years, ताकि वो 2 साल की tenure में वो कुछ कर सके। आपको पता है कितने केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में? हम ये जो चीजें, या तो फिर वही काम होगा कि वो जज या काम नहीं करेंगे अपना जो काम करना चाहिए, या फिर वो कमीशन का काम नहीं करेंगे। फिर आपका इतराज यही होगा कि जी, क्योंकि नॉर्मल डे पे आपको पता है हम लोग को जितना काम होता है वो बड़ी मुश्किल से हम निकाल पाते हैं दिन को, ठीक है? तो वो
नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है, कितने बेंचेस हैं आपको पता है, कितने पेंडेंसी है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये भी आपको पता है। तो ये ज़रूरी तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज में आकर के वो सारी खूबियाँ आ जाए कि वो कमीशन का काम भी कर ले। ये डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए जो फुल टाइम हो, नॉट पार्ट टाइम। सुप्रीम कोर्ट का जज को आपने बिठा तो दिया तो वो काम करेगा पार्ट टाइम, तो नेचुरली पार्ट टाइम ही कर सकता है, या तो उसको कहे अच्छा आप केसेस ना चलाओ बस यही काम करो। सर इस तरह तो इस वक्त तो हो ही कुछ नहीं रहा ना, वो पार्ट टाइम भी नहीं है, वो फुल टाइम। आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह बेहतर करेंगे चीजें, एक दिन में तो नहीं होंगी ना, मगर जरा से ब्रीदिंग स्पेस हम देना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को। जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, आपने अपॉइंट किया था उनको? जी सर, मैं और क्या कहें आपको, तो आपकी हुकूमत ने, सॉरी आपने नहीं किया तो अब आपकी हुकूमत ने थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। सर ये रिक्रिमिनेशन वो अब नहीं छोड़ देना, अब हम थोड़ा सा इनको मौका तो देना कुछ बेहतरी लाने में। मैं मेरा जरा सुन ले जो स्ट्रक्चर में जी। अब आपने जो देखा है ना, इसके आपने जो प्रपोज किया प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार, ये सिविल सोसाइटी, आप जरा सुनिए ना, हमने बहुत दफा तजवीज़ें मांगी हैं, वो इंडिविजुअल पे होता है। कोई प्रेसिडेंट बहुत इंटरेस्टेड है, कोई प्रेसिडेंट कहते हैं यार ये क्या मुझे एक काम करना है मुफ्त में, ठीक है, तो वो भी देखें हम, ये बर्डन हम प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बलूचिस्तान, अब ये अगर ये बॉडी मीट ही नहीं करेगी, कभी काम ही नहीं करेगी, डेडिकेटेड लोग होना चाहिए जो कि अगर काम करें। आप असेंबली नहीं कर सकेंगे, इतने सारे मेंबर्स पूरे पाकिस्तान में। कल को कहेगा जी मैं तो रिटायर हो गया, वो एक टर्म का टर्म होता है, हर साल इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शनियरिंग में लग जाते हैं, फिर वो केसेस भी हमारे सामने नहीं कभी चलाते हैं कि जी अब इलेक्शन हो रहा है आप मेरा केस अर्जन कर दें। तो ये मैं इसमें जरा सा हम देखें इत्तेज़ार साहब, I am at least very conservative. I want every functionary of the state to do its own job. We want to call upon the government of Pakistan to do its job. If they fail to do its job, then we can certainly take on suggestions on board, and they may agree with your suggestions or they may not agree with your suggestions, but it's primarily the responsibility of the government to appoint a commission. I can't tell the government to appoint this one. I can certainly suggest that maybe this person may not be appropriate. Your lordships can yourself appoint the commission. Commission appoint हुई है, देखिए वो दो किस्म के कमीशन होते हैं ना, एक होता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, वो पावर उनका है, वो गवर्नमेंट का है, हमारा पावर है, गवर्नमेंट का, एक आपका पावर है, आपकी पावर को एक्सरसाइज करें। और मैं इसमें जरा एक चीज जो मैंने सिविल सोसाइटी के मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव बंदे नॉमिनेट करने को कहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, presidents of four provinces. Why? Sir, they are. अभी ये बाकी देखेंगे the mix. Give me a reason. Reasons because they have an urge to pursue. They will. और हमारे बार एसोसिएशन में हर साल इलेक्शन हो जाता है, तो नया बंदा आएगा, कोई हमारा नया मैंडेट लेके ये एक रोस्टर ऑफ द बार इलेक्शंस कंपटीशन में हो जाएगा। वो आने देना, उनके कमेंट्स आते हैं, अगर सिविल सोसाइटी को वो ऐड करना, वो तो उनका काम है नॉमिनेट करना और इसको नोटिफाई करना ना। जी सर, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, आप ये दो देखें, Director General Center of sorry to interrupt. ISI. एक second. Sorry to interrupt you. I was just given a note. There's a Judicial Commission of Pakistan meeting for Peshawar High Court judges. जो schedule है 3 o'clock. ठीक है सर, ठीक है। We don't want to. We are taking this case seriously. ये हम इसको कल फुल कोर्ट तो नहीं, वो बेंच तो नहीं, 11 बजे लार्जर बेंच है। PFUJ को भी मैंने इसमें PFUJ and 2 senior officers, senior most officers of the Inter-Services Intelligence and the IB. वो तो आप रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात करें ना, कमीशन, वो लेट द अटॉर्नी जनरल टेक सम इंस्ट्रक्शंस एंड उसमें देख सकते हैं, अगर वो नोटिफाई करें। अटॉर्नी जनरल आप ऐसा करें, आज we'll just treat it today as part heard, but
just make a note of the things that we want you to do. Come back with. Monday को हमने भी कोई रखा ना केस क्या रखा? Sir, I'm appearing for the respondent in 2 of CPLAs that were filed by the government. Salahuddin, hold. थोड़ा सा रुक जाइए. Monday को कुछ और है? There is presidential reference on Monday. Tuesday को क्या? केस बेंच कंटिन्यू कर दी तो Tuesday को कर लेंगे. उससे भी नहीं पता जाना चाहते हैं. ठीक है. कहाँ जा रहे हो? छोड़ना चाहते हो? कमाल. अच्छा, आप ऐसा करें, come up with some practical suggestions. Talk to Mr. Faisal Siddiqui. Take these production orders. बल्कि हम ऑर्डर डिक्लेयर ही कर देते हैं. लिखें. Sorry, Salahuddin साहब, आप इस केस में? Sir, I am in CPLA 1503 and 1504. I am appearing for the respondent. The government had filed an appeal against orders regarding the students passed by the Islamabad High Court. I was informed that the government no longer wishes to press. जी, Salahuddin साहब हमने withdraw कर लिया. These appeals have been withdrawn. अच्छा, ये बताइए, वो जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसने क्या काम किया? वो ऑर्डर रिव्यू हो गया क्या बाद में? That commission headed by Mr. Akhtar Mangal had furnished its report. The commission was constituted. नहीं, it was headed by क्या नाम है, सादिक संजरानी. नहीं sir, Mr. Akhtar Mangal ultimately headed it. Mr. Sanjani refused to head it. उसने कुछ किया या नहीं किया? नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक फर्निश की है सर. वो किधर है? Sir, I'll place it on record. It is before the Islamabad High Court. अच्छा. The report was furnished and it is on record. इसमें लिखिए, वो ऑफिस कौन है? स्टेनो कहाँ है? ये रिकॉर्ड कर रहे. ठीक है. ये आपकी नंबर, उसको नंबर कर देते हैं. इत्तेजाज एहसन फेडरल आपकी एक है 161 है और यही है ना? उनकी है, खुशदिल खान की है 124. सबसे पहला केस तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं. ये क्या कह रहे हैं? विड्रॉ करना चाह रहे हैं. अच्छा, और ये इनकी अपील है खुशदिल खान की. इनका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाहना है. ये तो इनकी आपको अगले दिन सुना था. इनकी तो कुछ जाती मसले हैं, लेकिन हम जाती मसले नहीं सुनेंगे इस केस में. ये आते हैं, बताइए. तो हम ट्यूसडे को इसको रखेंगे. एंड वी वांट यू टू, वी विल डायरेक्ट दिस कमीशन to provide you with the information and you can seek any further information from them, what became of the production orders, and they have to submit a comprehensive report. My Lord, if maybe given a little more time, because if they can share the production orders with me, let's say by tomorrow or day after, it might need a few days to get the report from the concerned agencies on each of the production orders. As I understand, there are about 700 of those. Over 700 of those, so it might require a little more time. CM appeal. All these matters pertain to. Shall we keep your matters pending or shall we? आपकी भी 3 है ना, 1 2 3. जी मालूम, ये विड्रॉ कर 4. जी मालूम, विड्रॉ कर ले. नहीं, इनसे पूछना अटॉर्नी जनरल से. जी my lord, the instructions are to withdraw them, sir. The government of Pakistan, which means that the orders will revive. My lord, the orders were complied with. The Islamabad High Court's order, on the basis of which the commission was constituted, that commission was constituted. The commission has furnished its report. So these petitions have become infructuous. 1503, 1504, 1505 and 4333. नहीं, वो उन 3 का लिखें. 2022 CPLA 4333 2021. पहले वो वाला लिख दें 2021 का. Learned Attorney General states that he is under instructions that through these
CPLA's orders passed by the Islamabad High Court were assailed. Full stop. Attorney General states that he is under instructions to withdraw these petitions. Full stop. And further states that the orders have been implemented, and further states that the orders impugned therein have been implemented, and that he will be filing a concise statement in this regard. Full stop. Accordingly, these petitions are dismissed as withdrawn. However, learned Attorney General to file concise statement as stated. Next paragraph लिखिए. ये इनका पहले लिखें. मेरे ख्याल में अब ये जो इनका नाम है आमना जंजुआ साहब का पहले आमना मसूद जंजुआ साहिबा का नाम लिखें. मिस लिखें या मिसेस लिखें आपके लिए, या मौसमात लिखें. MRS. ओके, MRS आमना मसूद जंजुआ एक केस में लिख दें. States that her husband, Mr. Masood Janjua, was disappeared on 30th July 2005 when he was to travel from Rawalpindi to Peshawar. Yes, my lord. And has not been heard ever since. And that she is not, and that she had approached the commission. क्या नाम है उसका? Commission on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. किधर था अभी पेज आपने बताया था? नोटिफिकेशन पेज बताया था ना 220 क्या था? 131. आपने किसी ने बताया था? 131. हाँ? 131. 131. वो तो लॉ है. हाँ ठीक है ठीक है. Had approached the Commission of Inquiry with an E on enforced capital E capital D disappearances, which was notified by the government of Pakistan, by the federal government, but is not satisfied with the working of the Commission. Full stop. Others present. The Commission comprises of, we are informed that the Commission comprises of the following: Mohammad Sharif Virk, the chairperson is Javed Iqbal Sahab. Yes, ma'am. The chairperson of the Commission is Mr. Justice Retired Javed Iqbal, Mr. Justice Retired Amanullah Yasin Zai, Mr. Justice Retired Zia Parvez, and Mr. Mohammad Sharif Virk. As member, वो members लिख दीजिएगा, उनका chairman लिख दीजिएगा. And however, she is not satisfied with the working of the Commission. The other petitioners too have expressed their reservations about the effectiveness of the Commission. ब्रैकेट में उसको एक दफ़ा कमीशन करके ब्रैकेट में उसको कमीशन कर दीजिएगा. ठीक है, उसके ब्रैकेट में कमीशन. मिस्टर खालिद नसीम, आप सेक्रेटरी हैं, रजिस्ट्रार हैं? रजिस्ट्रार सर. Registrar of the Commission, however, states that the Commission has done considerable work and a number of persons, and due to its workings, a number of persons have been recovered / returned home. Full stop. इनका लिखने सिविल मिसलेनियस अपील नंबर 161/2023
The Registrar of the Supreme Court had raised objections on the maintainability of a constitutional petition filed by Mr. Itazaz Ahsan. Full stop. The petition refers to petition also attends to the matter of missing persons. Full stop. As we have already taken notice of the petition filed by Mrs. Amna Masood Janjua, and to the extent that the petition filed by Mr. Itazaz Ahsan attends to the case of missing persons, the office objection overruled. Let the office is directed to number the petition. इनका खुशनी खान का करेंगे ना ट्यूजडे को गाड़ी कर देंगे ना फोन के उसी में ये करेंगे तो अभी नंबर कर देंगे अभी नंबर कर देंगे उसको लाओ उसी पर रखें नंबर करेंगे तो फिर इंजीनियरिटी का इशू है ना आप उसको उसी बुनियाद पर उड़ाएंगे ना कि तुम्हारा तो पर्सनल इशू है मिस्टर बनिए उसको दिन समझेंगे पर्सनल इंजीनियरिटी नहीं हुआ तो देख लो अच्छा ठीक है तो अच्छा फुल स्टॉप Secretary of the Commission. Similarly, another petition has been filed by Mr. Khushdil Khan Malik, but the same was also but in respect of the same office objection also raised, and he has filed CM Appeal number 124/2022, which has raised a number of issues. However, we restrict the matter to the case of missing persons and if the other grievances raised therein, some of which are personal, will not be attended to. Full stop. And the office is subject to our observations in this regard. इत्तेज़ाज़ साहब और आपका भी यही होगा वो वाले केसेस हम नहीं अटेंड करेंगे missing/enforced नहीं वो वाले केसेस जो है ना वो हम नहीं अटेंड करेंगे आपको बता रहे हैं अभी से हम मिसिंग पर्सन पे फोकस कर रहे हैं इनका भी लिखने टू बी नंबर्ड that is not as I submitted that is not just an individual case or individual cases they set and establish a pattern. And that pattern is the one that your lordship has to address. It's similar fact evidence. I know. I'm very cognizant of our jurisdiction. We are exercising jurisdiction, habeas corpus jurisdiction. If a person comes home, habeas corpus finishes, then that doesn't mean you don't have a remedy. Then your remedy can be a criminal case, your remedy can be tort, your remedy can be a suit for damages, but the Supreme Court's powers end on habeas corpus, the same power Supreme Court exercises as in Article 199. So the person comes home, who picked him up, what comes up, that person is at liberty to go and do whatever he wants to. But our job ends there. And we will certainly not hear you in respect of those who are not even before us. हम चाहते नहीं है ये सारा लिखें अगर आप चाहते हैं हम लिख देंगे लेकिन उनको भी हमने खुशदिल खान को भी रोक दिया है और हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एक इशू पे अगर देखिए अगर हम इतना डाइल्यूट करेंगे तो हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे और कोई और काम भी नहीं कर पाएंगे तो फोकस हम नहीं ब्रॉड स्कोप है अगर आप इससे मुतमईन नहीं हम आपको रोकना नहीं चाह रहे हैं फिर हम आपका नंबर नहीं डालते हैं आज फिर हम आपको लंबी तक सुनेंगे फिर फैसला करेंगे मैं क्योंकि अर्ज कर रहा हूँ हमारी मीटिंग है जी सर मैं तो आप करिए अर्ज जनाब फरमाते हैं तो मीटिंग नहीं होती मेरे होते मुझे नेक्स्ट डेट पे दो जुमले तो अर्ज कर लें चले करिए मेरा जो मामला है ये इंडिविजुअल या हेबस कॉर्पस का नहीं है ये आपको बताना है एक पैटर्न नया शुरू हो गया है ऑफ कमिटिंग अ क्राइम विच यू आर कंसर्न्ड विद इन द ब्रॉडर पिटिशन वी
फरक हबीब था या कोई, it is the new mode of tackling. What basis are you saying this? Sir, वो मैंने example दिए. Are you dar? No. Are you his lawyer? No. I am Then here. on what basis are you saying it? In public interest. No. In public interest. 4 लोगों के नाम पब्लिक इंटरेस्ट में आ गए. सर 4 लोगों के नहीं है ये. 4 लोगों के आपने नाम लिखे. 4 लोगों के नहीं, वो 4 से ज्यादा है वैसे, but they established a pattern. 4 people. Of very not 4 sir, there are more than 4. आप पढ़ लेते हैं अभी आगे पढ़ लें. आगम और भट्टी 2 तो यही है. Asked the Attorney General to seek proper instructions, and he has already given a statement that let him take the instructions and submit the report on which whether the persons are being arrested or not in accordance with the law or without due process of law or against Article 4 of the Constitution. वो तो दूसरे केस में हमने किया है. नहीं, वो तो दूसरे केस में किया है. नहीं, मेरे केस में भी ये रिपोर्ट दे दे. वो दूसरा केस था. वो तो वो वाला था, वो कंटेम्प्ट वाला. इसमें तो नहीं किया. दूसरे केस में. My lord, it was in this case. हाँ? It was in this case. इसी में ही था. नहीं, वो वाला केस, वो जो कंटेम्प्ट वाला था. नहीं, इसी में नोटिस हो गया ना वो. हाँ? इसी में था. इसी बलोच मिसिंग पर्सन. लॉन्ग डे बट वो ये पेज 6 पे बलोच मिसिंग पर्सन. चले हम ये बात भी देखते हैं. अच्छा, वो और क्या रह गया था? The commission is directed to submit comprehensive report and provide copy of the same to the learned Attorney General, including all production orders issued by it and the learned Attorney General to submit report if the said production orders have been complied with, and if not, why not. ठीक है. फिर हम बाकी चीज़ें बाद में कर लेंगे. कमीशन हमारा हो रहा है 3 बजे से. आप भी तो उसमें आ रहे हैं ना हमारे सामने. कुछ बातें रह गई हैं तो हम इसको बताएं. कितना टाइम दें आपको? क्योंकि फिर आप देख लीजिए इनकी कुछ एंग्जाइटी और कमीशन वगैरह आप देख लें. इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द कमीशन और नॉट, वो जब रिपोर्ट आपको देंगे उससे बातें आपके जहन में आ जाएंगी. फिर आप क्या करना चाहते हैं, तो कोई आप हमें डेट सजेस्ट कर दें. तो अब एक इनसे पूछते हैं. दूसरी बात, एक हमने जो नोटिस ली थी, मगर इन्होंने कहा था, मगर इन्होंने दे नॉट कंसर्न विद दैट. सॉरी, बुरा ना माने शोएब साहिन साहब. हमने कहा था जी यहाँ से जो लोगों को उठाया गया था, उन्होंने कहा मैं ला रहा हूँ पिटिशन, मैं अमेंड कर रहा हूँ इसको. उन्होंने ना लाए पिटिशन और ना अमेंड किए. अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उनका बुनियादी हकूक है. अगर वो कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो एक अलग बात होती है. ये नहीं कि उनको धक्के मार से, डंडे मार से उनको उठाया जाए. नहीं, उनको बहुत रुस्वा कर रहे हैं. बहुत रुस्वा किया है. एक सेकंड सर, आपने तो नहीं लिया है ना. इन्होंने वादा किया था वो करेंगे, नहीं किया उन्होंने पूरा वादा. हम अब अपने तौर पे कर रहे हैं. वी डोंट वांट दिस सॉर्ट ऑफ टैक्टिक्स employed by a responsible state. If someone wants to protest, let them protest to their heart's content. But you cannot just bundle, unless they are taking the law into their own hands, destroying public property or doing something violent. They have a right to protest. That right to protest must not be in any manner curtailed, let alone by force. ठीक है, that's their fundamental right. We may just add things in the thing. So now we have to go to the commission. Now we just propose a date. How much time do you want? No, my lord, if and if you can we appoint Mr. Faisal Siddiqui as amicus in this case? Of course. Huh? Of course. Mr. Faisal Siddiqui? Always. You are already appearing for someone or not? No. I'm amicus in all these missing person cases before the Islamabad High Court. That is why I had this. The amicus has to foot his own bill. ये बलोच जो यहाँ आए हुए हैं ना जी, जस्ट मैंने विजिट किया सर. इट इज अ पैथेटिक स्टेट ऑफ. रात तकरीर ना करें, कागज का टुकड़ा लाइए, फाइल कीजिए पिटिशन. वो Mr. Faisal Siddiqui advocate who is present in court and has rendered assistance is appointed as amicus to assist with the case. Whenever this case is fixed, his travel and staying costs will be borne by the government of Pakistan. Travel and staying costs, that's all. No fees.
अच्छा, इसमें ये डेट कौन सी दे रहे हैं? ये बताइए अटॉर्नी जनरल, व्हाट विल बी अ रीजनेबल टाइम? My lord, if the commission can give ये आपको देंगे, कितने दिन में आप दे सकते हैं पहले बताएं? इनको ये पूछ लेते हैं इनसे। खालिद साहब, आप कितने दिन में इनको दे सकते हैं? ताकि खालिद साहब, कितने दिन में आप इनको दे सकते हैं? कुछ आइडिया दे रहे हैं, टाइम दे दें 2-3 हफ्ते। भैया आपको कितने दिन में इनको कम से कम 3 हफ्ते दे दें, क्योंकि हमारा स्टाफ है नहीं। बात कर रहे हैं यार, एक स्टैंडअप भी नहीं है हमारे पास ना। नहीं 2-3 हफ्ते में क्या है, जल्दी काम है, 8-10 दिन में कर ले, 8-10 दिन मैक्सिमम। कितने सर, कितना टाइम? 10 days, 10 to 15 days दे दें फिर सर। 10 to 15 within 10 days। ठीक सर, ये 10 days में आपको देंगे, फिर आप कितना टाइम लेंगे? तो if they can share production orders in, let's say, within 10 days, share production orders जल्दी शेयर कर ले। रिपोर्ट इन्होंने 10 दिन में देनी है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स 2 दिन में आ जाएंगे। आप हमें the case can be listed, let's say, after 2 weeks। 10 days के बाद 2 weeks? No, 2 weeks from now। ठीक है, फिर हम डेट तक लिख लेंगे, अपना जरा देख लेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर्स मैं इनसे ले लूंगा 2 हफ्ते में। Preferably, Mr. Faisal Siddiqui, if your lordship may just mention that the report which is to be submitted before this court on production orders must be on each of the cases. Yes, ये कोई general report? No, we don't want numbers. ये आप हमें नाम देंगे सबके, बल्कि इनको देंगे ना। सर, एक गुजारिश और है सिर्फ जी, वो ये है, वो फखरुद्दीन जी इब्राहिम का करते थे कि मंडे अगर फिक्स करने लगते थे कोर्ट, तो वो कहते थे मंडे ना, ट्यूसडे का। उनसे पूछते थे जब जज साहिबान कि वाई नॉट मंडे, तो वो कहते थे केस तो पता नहीं चले ना चले, पर संडे खराब हो जाए तो ट्यूसडे। ऐसे ये बताइए एतजाज साहब, आप हमारे सामने कभी यहाँ आए और आपका केस ना चला हो? नहीं। एक एग्जांपल देते हैं। नहीं, अगर नहीं चला तो आपकी एडजमेंट की दरखास्त आई हुई होगी। हमारी तरफ से हम पूरा बोर्ड खत्म करके जाते हैं। अब आप देख लें 3:30 बजे हैं, ठीक है। अगर आज हम आपको देर तक सुनते हैं, मगर आज हमारी JCP की मीटिंग है, Very grateful, 3 बजे रखी हुई है। अदरवाइज वी ट्राई टू फिनिश द बोर्ड, एटलीस्ट आई ट्राई टू ह्यूमनली पॉसिबल। वन ऑफ आवर कोलीग्स इज नॉट वेल, she is seriously unwell and she's come and sat in court। चलें, के बारे में सिर्फ एक बात करनी थी, बलोच प्रोटेस्ट के बारे में चलें। मतलब सिर्फ एक बलोच प्रोटेस्ट के बारे में, प्रोटेस्टर्स के बारे में बात करनी थी। उन्होंने ये कहा कि जी जो पिटीशन पेंडिंग है हमारी वही रिक्वेस्ट करें। आपने कुछ नहीं फाइल किया, मगर हमने अटॉर्नी जनरल को ऑलरेडी कर दिया है। ही इज सो फार रिस्पॉन्स। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के केस की समाअत जारी थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरद हिलाली भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लोग तकरीरें कर लेते हैं, जिनका वक्त होता है वो करके दिखाएं। आपके केस में बहुत गहराई और तफसील से दलाइल हो चुके हैं। एतजाज अहसन के वकील शुएब शाहीन रोस्टम पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद धरना केस में करार दिया गया था कि पुरअमन एहतजाज शहरी का हक होता है। कोई शहरी रास्ता रोके या तशद्दुद करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं हैरान हूँ, आप फैज़ाबाद धरना केस का हवाला दे रहे हैं। जिस पर शुएब शाहीन ने जवाब दिया कि मैं हमेशा से फैज़ाबाद धरना केस का हवाला देता रहा हूं। आपने खुद फैज़ाबाद धरना केस के फैसले में एजेंसियों के किरदार पर लिख रखा है। जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फैज़ाबाद धरना केस का वो हिस्सा बताएं जो बलोच धरने के शुरा पर लागू होता है। शुएब शाहीन ने कहा कि अगर फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद होता तो ये हालात ना होते, हमें अदालत ना आना पड़ता। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने रिमार्क्स दिए कि बलोचिस्तान में फ़िरका वारियत पर भी कत्ल होते हैं। क्या कत्ल करने वालों का खुदा का खौफ नहीं होता? 6 हज्जाम कत्ल कर दिए गए, लोगों को खौफ नहीं आता? दुनिया में हो सकता है वो लोग कानून की गिरफ्त में ना आए, लेकिन आखिरत में जवाबदेह होंगे। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद कमीशन के काम से मुतल्लिक भी गुफ्तगू हुई। समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई।